Okay, chemistry, paper 6, alternative 2, practical, paper number 62, October, November 2021. Duration is 1 hour. Carbon dioxide is a colorless gas that is denser than air. Carbon dioxide can be made by reacting marble chips with dilute hydrochloric acid. Marble chips with dilute hydrochloric acid. A student tries to make and collect carbon dioxide gas using the apparatus shown. तो ये आपको apparatus जो है उसका नजर आ रहा है, ठीक है. Name the substances label A and B. ठीक है, तो substances हमने बताने हैं, ठीक है. So these are hydrochloric acid, dilute hydrochloric acid. And B is marble chips. Name the item of apparatus label G. Conical flask. Explain why very little carbon dioxide gas would be collected using the apparatus shown. So, अगर आप apparatus की तरफ देखें जो मैंने दिखाया हुआ है, तो इसमें इन्वर्टेड मायरिंग सिलेंडर उन्होंने सिर्फ आपको दिखाया जिसमें कि यहाँ पे जब गैस कोलेक्ट होगी तो इट इज़ चांसेस कि ये यहाँ से escape हो जाए, ठीक है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ डेंसर देन द एयर, ठीक है. सो it is drop out of the jar. Carbon dioxide is denser than air. That's why it is escape or drop out of the jar. ठीक है, दोनों पॉइंट आप मेंशन करेंगे क्योंकि आपका 2 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन उन्होंने कहा होगा, ठीक है. Complete the diagram to show how carbon dioxide gas could be collected and the volume measured. ठीक है, तो इसमें आप मायरिंग सिलेंडर विद यूज़ कर सकते हैं, जो वाटर टब हम दिखाते होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ओवर वाटर. और उसके बाद हम जो है वो एक गैस सिरिंज यूज़ कर सकते हैं. सो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले इधर हम एक वाटर बाथ बना लेते हैं जिसमें कि हमें इन्वर्टेड ट्यूब को इंसर्ट करना है, ठीक है. दिस वन, ये बिल्कुल आपने इसके लेवल पे बनाना है.
कार्बन डाइऑक्साइड इधर कलेक्ट होगी। ये अब हम ट्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। इसको जैसे भी आप जो है वो इस तरह से करके आप ड्रॉ कर, ठीक है। एक ये हो गया आपके पास। एक नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि हम इसके साथ सिरिंज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि ये आपकी है ना दिस वन, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसके साथ इधर आपने एक ट्यूब अटैच करके, तो ये आप इसके साथ एक सिरिंज ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको मेथड 1 और मेथड 2 में से जो आपको इजी लगता है तो वो आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। At the end of the experiment, there were unreacted marble chips and aqueous calcium chloride in the item of apparatus labeled C. Conical glass. Describe how you would find the mass of unreacted marble chips in apparatus C. आप unreacted marble chips का वेट कैसे करेंगे? आप उसको फिल्टर करेंगे, देन वॉश करेंगे, रिंस करेंगे वाटर से, उसके बाद आप उसको ड्राई करेंगे और वेट करेंगे। अब इसको राइट डाउन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। Filter the content of flask to separate solid marble chips from aqueous calcium chloride solution। आप इसको इंग्लिश में पूरा लिख लें, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। मैं इसको फॉर्मूला लिख रही होती हूँ ड्यू टू स्पेस एंड टाइम। rinse or wash marble chips with water to remove any or remaining calcium chloride। Dry the marble chips and measure the mass of marble chips by using
बैलेंस, ठीक है। दे मेंशन मैस, तो आपने मैस ही मेंशन करना है, वेट नहीं कर देना, ठीक है। A student investigated the reaction between two different solutions of aqueous sodium carbonate, solution K and solution L, and two different solutions of dilute hydrochloric acid, acid M and acid N. Three experiments were done. Experiment 1. A burette was filled with solution K. Some of solution K was run out of the burette so that the level of solution K was on the burette scale. अब burette में से जो solution है उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे so that उसका level जो है वो scale पे आ जाए. Using a measuring standard, 25 centimeter cube of acid M was poured into a conical flask. So you have to put 25 ml of solution K, 25 centimeter cube. Sorry, 25 centimeter cube of M. Okay. 5 drops of methyl orange indicator were added to a conical flask. आपने 5 drops add कर देना methyl orange. Methyl orange. The conical flasks were placed on a white tile. So we have to place it on white tile. Solution K was added slowly from the burette to the conical flask while the flask was filled until the solution just changed color. So we add solution K from burette. Okay. इसको हम साथ साथ fill करेंगे. Use the burette diagram to complete the table for experiment 1. Initial reading and final reading. Okay. Final reading, final burette reading, it is 31.6. 31.6. Initial burette reading, it is 8. Volume of solution K added. Volume of solution K कितनी हमने ऐड की? तो ये आ जाएगी आपके पास 31.6 में से 8.0 माइनस कर दें तो ये कितना आएगा? It is 23.6. 23.6 जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन K यूज हो गया. Next, experiment number 2. The conical flask was emptied and rinsed with distilled water. The burette was refilled with solution K. Some solution K was run out of the burette so that the level of solution K was on the burette scale. Using a measuring standard, 25 centimeter cube of acid N. Now this experiment with acid N was poured into the conical flask.
The conical flask was placed on a white tile. Solution K was added slowly from the beaker to the conical flask while the flask was filled until the solution just changed color. Okay. It is final burette reading 15.9. 15.9. Okay. And initial burette reading, it is 4.1. And volume of solution K used, it is 11.8. Okay. Experiment number 3. The burette was emptied and rinsed with distilled water. The conical flask was emptied and rinsed with distilled water. The burette was filled with solution L. Some of solution L was run out of the burette so that the level of solution L was on the burette scale. Using a measuring cylinder, 25 cm cube of acid N was poured into the conical flask. So this experiment is also with acid N, but solution L is used this time. 5 drops of methyl orange indicator were added to the conical flask. The conical flask was placed on a white tile. Solution L was added slowly from the burette to the conical flask while the flask was filled until the solution just changed color. So now final burette reading, it is 26.4. Then it is 2.7 initial and volume use is 23.7. तो हम इसमें 26.4 में से हम माइनस कर देंगे 2.7, तो आपके पास वॉल्यूम यूज जो वो आ जाएगी. State the color change observed at the end point in the conical flask in experiment 1. Experiment 1 में from red to orange. Describe one other observation made when solution K was added to acid M in experiment 1. It is bubbling, fizzling, bubbling. आपको सीन होगी, ठीक है. Compare the volume of solution K used in experiment 1 and experiment 2. In experiment 1, greater volume of solution K is used. About twice the volume of solution K in experiment 2. (23.6 and 11.8). So it is about twice, ठीक है. Suggest why different volume of solution K were needed in experiment 1 and experiment 2. एक्सपेरिमेंट 1 और 2 हमने किए थे सेपरेट एसिड M एंड N के साथ, ठीक है. सो अगर आप देखें तो solution M या acid M is more concentrated than acid N.
concentrated than acid and that's why different volume of solution K is used. Okay. Deduce the volume of solution L required to reach the endpoint if experiment 3 is repeated using acid M in place of acid N. So acid M अब हम यूज करेंगे in place of acid N एक्सपेरिमेंट 3 में. तो अगर आप देखें तो acid M is more concentrated. ठीक है. So जब ज़्यादा concentrated होगा तो उसकी जो होगी वॉल्यूम भी वो उसी तरह से solution L की वॉल्यूम यूज ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. सो डबल हो जाएगी वॉल्यूम. ठीक है. तो इट इज double the volume of solution L. So 23 points. 47.4. So it is 47.4. Double the volume. 47.4. The volume of solution L. Okay. Got it? Explain why the conical flask was rinsed with water at the start of experiment 2 and experiment 3 to remove impurities लिख सकते हैं और to clean to remove residue from previous experiment. At the start of experiment 3, the beard was rinsed with water. Describe an additional step that should have been done after rinsing the beard with water but before filling the beard with solution L. Explain your answer. हम इसको solution L के साथ भी रिंस कर सकते हैं. Rinse with solution L so that कि उसमें से जो water to remove water. ठीक है. Solution L to remove water so that it may not or solution may not dilute. ठीक है. तो वो dilute ना हो जाए. ठीक है. और to avoid concentration change. Explain why the conical flask is placed on a white tile. So to see the color change clearly. आपको easily और clearly जो है वो visible हो जाए. Describe how the reliability of the result can be confirmed. Repeat the experiment. Experiment को आप repeat कर सकते हैं 2 to 3 times. Then compare the result of experiments. Okay. State one source of error in experiment 1. Source of error क्या हो सकता है इसमें?
माइरिंग सिलेंडर, और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है? यूज अ पिपेट, आप पिपेट यूज कर सकते हैं।